So I'm sharing my screen. Okay. Is it visible, everyone? Yes, madam. Okay. You have to say, because if I'm sharing my screen, I can't, see my previous screen. Only I can have my presentation on my screen. Okay. So yesterday we have seen RAM, all right, which is now what is RAM? Which type of memory it is? It is random access Random memory. access It memory. internal memory, otherwise we can say primary memory, Yes. and it is a volatile memory. When power is on, then it is a storage memory. Temporary, this is called the temporary memory also. Mm-hmm. And it is having two part, SRAM and DRAM. SRAM, it is basically made by the transistor, which is very faster and very costly, but density of storage is very less. DRAM, it is high density, long storage. It is having the capacitor storage memory. But thing is that it is the cheaper, and compared to SRAM, it is slower. Okay, I'm not asking about DRAM or SRAM. I'm just asking about RAM and ROM. RAM and ROM, both memories are primary memories, or you can say internal memories, which are inbuilt in your CPU. And your ROM, that is the read-only memory, that is non-volatile type of memory. Here, all the programs, all the set of instructions which are given by the manufacturers, they are stored at one place that we call ROM, and you cannot change them. You cannot. Some of the memories in ROM you can change, but not you. You know, special processing should be required. We'll see later the types of ROM. So ROM is non-volatile primary memory and RAM is volatile memory. That's why it is called random access memory. Random access means all the instructions which are required by CPU during your system is in function. When you are working in the system, then your CPU required some set of instructions on a regular basis, like one by one, maybe many recurring times it needs some information. So those information RAM takes from ROM, and it is permanent, not permanently, temporarily stored in RAM. So that's why it is a random access memory, and it is a volatile memory. When your system is off, like when you shut down or in a sleep mode or whatever, if it stops working, your system, then all the things in a RAM, it will be removed or vanishes. So temporary storage for functioning of the CPU, RAM is required. All right. Now ROM. ROM is read-only memory. You can only read, not you, only the CPU, because the processing is done by those circuitry. So it is a non-volatile memory, more like a permanent storage for information. And it also stores the bootstrap loader program. When you when you start, when you just open up your laptop or when you switch on your desktop, then some instructions should be there in the CPU, which commands the system to switch on. It is not like when you switch on your light by a particular switch on and off. Immediately you will get the light or the turn on of your fan. It is not like that. There's some system, some programming within the computer which forces it to switch on. So that is called the boot, or the to load, to the starting operation instructions. So to load or start the operating system when computer is turned on. So that is the bootstrap loader program. And when you open your computer and laptop, the first thing you see is the logo, all right, the name of the company, or something. It may be you put some picture or something like that. So because the company that made that computer, that company has programmed it in ROM, so that as soon as this system is open, then this logo or brand name is displayed. And there are three types of ROM.
PROM, EPROM, and EEPROM. That is programmable ROM, then erasable programmable ROM, then electrically erasable programmable ROM. They are generally, commonly we call it ROMs. Now this, you should know the full form of these types of ROMs. Not much detail is required because it is having, too much technical terms and all. But here a few sentences are given for each types of ROM. So let's see it. So programmable read-only memory, it is different from somewhat from the ROM, because while ROM is programmed, that is data written on it during the manufacturing process, this PROM is manufactured in an empty state and then programmed later using the PROM programmer as per the requirement of a particular company or organization or particular need, like that. Then second one is EPROM. EPROM is erasable programmable read-only memory. That name suggests that data stored in EPROM can be erased and reprogrammed. Now, this erasing of this ROM involves removing it from the computer, exposing it to the UV lights. So it's not, a user part. It's a workstation or substation or a company's part. If you want certain set of computers to be redesigned as per your requirement or need, then such things have been done. Then EEPROM, it stands electrically erasable programmable read-only memory, and this has the feature that you can easily erase a data from this chip and program new data easily. Now this data is easy as compared to EPROM chip, because there is no need to take it out the device or delete the data, whereas the data of EPROM and this chip has to be removed from the device. Now, electrical power has to be used to erase the data of this EEPROM, and it requires few milliseconds to erase the data, and then accordingly you can put some data as your requirements. So you can erase the data of the entire chip at once, and you can also program the data of this chip part by part. Now the secondary memories. Now all these memories still we have studied, they are primary memories, or you can say the internal memories or main memories. Now secondary memories are the secondary storage units or auxiliary memories, because this memory has somewhat larger storage capacity, right? Storage capacity of primary memory is less as compared to secondary memory. Secondary memory has large storage capacity and it retains the data permanently until the user erases it, right? They are user friendly. You can use your own memory card or memory devices external to the computer and store the data, store the files or documents, and then you can remove it also, delete it also. So all these type of data, they may be permanently. If you want, you can store it permanently, or you can erase it. So non-volatile nature does not lose the data. It holds even if the computer shuts down, or even if you take out your memory device from the computer and keep it separately. So it is, but the speed is less. Speed is very, very less as compared to primary memory. So primary memory are faster memory, secondary memories are slower memory. And CPU cannot access secondary memory directly. All right, this is one of the main thing. Yeah, the CPU needs some, some memories to, set of instructions or data. Through that memory, CPU can access the content of the secondary memory. So data or applications or instructions stored in it are first transferred to the primary memory. Now, which memory in primary memory?
Which memory stores that data for time being? Which memory? What do you think? Primary. No, that's what. Primary memory is there, but which one out of the two? You have studied two primary memories, right? Yes, madam, RAM and ROM. Whenever that the power is on, then the computer any for booting process take place from the ROM only. After that, temporary memory is to get to store to the RAM. Yes, RAM memory. RAM memory stores the data for the time being as much as your CPU needs to process the data, right? If you have stored, if you connect like a pen drive to your computer and you want to see some video or listen some music or something like that. So what you do, you have to connect your device, secondary memory device to the computer, and then CPU access it. CPU runs that program or movie or video or graphic or audio, whatever it is. Now, CPU needs some memory to, CPU cannot access directly to the secondary storage, secondary memory. So it needs in between some, um, uh, you can say the channel to channelize or to connect the CPU and storage unit, right? That then only you can run the program which is stored in your secondary device. CPU is the only circuitry which process the data. So RAM is a primary memory which access and stores the instructions or whatever data or document or file or audio, whatever form information is there in your secondary storage through RAM or cache memory. The CPU gets the access to your storage, that is your personal storage. So what is most interesting in this type of memory is inside a computer, and it is external device that can be connected to a computer as and when it is required. Now there are certain examples of secondary memories. तो हिंदी में भी मैं बताऊं इसको कि जो सेकेंडरी मेमोरी होती है आपकी वो बाहर होती है, मतलब कि प्राइमरी मेमोरी हमने दो तरह से पढ़ी, रैम और रोम। वो इनबिल्ट है, वो एक मदरबोर्ड के ऊपर सीपीयू के अंदर दो तरह की चिप हैं जो कि रैम और रोम है। रोम में वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो मैन्युफैक्चरर जो है वो डालते हैं ताकि आप कोई भी प्रोग्राम, कोई भी काम जो है कंप्यूटर पे करते हो तो उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कुछ कोडिंग होती है जो कि बहुत पर्सनल, प्राइवेट और उस तरह की होती है। तो वो आप रीड राइट नहीं कर सकते हो, वो मैन्युफैक्चरर द्वारा प्रोवाइड होती है। जैसे डिस्प्ले यूनिट वो देगा, है ना, कीबोर्ड, माउस, जो भी चीज़ें हैं वो देता है, तो उसकी डिज़ाइन और उसका कैपेसिटी और ये सब चीज़ें जो हैं एक तरह से उनकी खुद की होती हैं, तो उसने वो दे दी। और रैम वो इंटरनल मेमोरी होती है जो कि सीपीयू को रोम के इंस्ट्रक्शन को एक्सेस कराती है। तो जो रैम है वो एक तरह से आपकी वॉलेटाइल मेमोरी है, मतलब कि शॉर्ट टाइम के लिए उसमें स्टोरेज होता है। जब आपका कंप्यूटर काम कर रहा है, जब आप उससे काम ले रहे हो, तब तक उसमें जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या सॉफ्टवेयर जो भी आप कह सकते हो, वो कमांड्स जिसे आप कह सकते हो, वो स्टोर होता है और जो सीपीयू है रैम के थ्रू उनको लेकर के और आपके डेटा को प्रोसेस करता है। तो ये इंटरनल मेमोरी हो गई। लेकिन सेकेंड स्टोरेज मेमोरी, आपको कोई डॉक्यूमेंट है, आपके पास फाइल है या प्रेजेंटेशन है या कोई ऑडियो वीडियो फाइल है, वो आप स्टोर करना चाहते हो, कहीं से आपने डाउनलोड किया, फिर आप उसको एक जगह पे रखना चाहते हो, तो उसके लिए सेकेंडरी डिवाइसेस, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस जो हैं वो काम में लेते हैं। और जो सीपीयू है वो डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं करता है, बल्कि थ्रू प्राइमरी मेमोरी जो है वो उसको कनेक्ट करता है। मतलब स्टोरेज आपका सेकेंडरी स्टोरेज किसी और फॉर्म में है, सीपीयू आपका कंप्यूटर के अंदर है, लेकिन प्रोसेसिंग कहाँ हो रही है, सीपीयू में हो रही है। तो उसको क्या करना है, आप किस तरह का कमांड दे रहे हो, उससे वो सेकेंडरी जो आपकी मेमोरी है उससे वो कैसे वो उसको कनेक्ट करे और कैसे उस डाटा को प्रोसेस करे, उसके लिए प्राइमरी मेमोरी की भी जरूरत होती है, रैम की। तो कौन कौन से तरह के सेकेंडरी मेमोरीज होते हैं?
वो हम देखते हैं। एक और चीज सेकेंडरी मेमोरी के बारे में कि ये जो सेकेंडरी मेमोरी है ये इसकी कैपेसिटी तो प्राइमरी मेमोरी से ज्यादा होती है, लेकिन सॉरी कम होती है, सॉरी ज्यादा होती है, लेकिन जो स्पीड है वो कम होती है। ठीक है, स्पीड किसकी ज्यादा होती है? स्पीड ज्यादा होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी की, लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी है वो किसकी ज्यादा होती है? सेकेंडरी मेमोरी की। इसकी स्पीड कम होती है सेकेंडरी मेमोरी की, प्राइमरी मेमोरी की स्पीड ज्यादा होती है, और स्टोरेज कैपेसिटी सेकेंडरी मेमोरी की ज्यादा होती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो जब भी आपको कंप्यूटर पे काम करना है या उसको कोई मूवी देखनी है जो आपने स्टोर करके रखी है, तो आप क्या करोगे? उस डिवाइस को कनेक्ट करोगे। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो आपका डिस्क के फॉर्म में हो सकता है, कार्ड के फॉर्म में हो सकता है, सीडीज के फॉर्म में हो सकता है, फ्लॉपी डिस्क तो अभी यूज नहीं होती हैं, पेन ड्राइव के फॉर्म में हो सकता है। तो वो आपने कनेक्ट किया, फिर सीपीयू के पास में एक कमांड गया कि भाई आपको पहले के कंप्यूटर्स में लिखा हुआ आता था कि रिमूवल डिसकनेक्टेड, और जब आप उसको मतलब प्रोग्राम शट डाउन करते हो तो उसमें एक कमांड आता था कि रिमूव योर एक्सटर्नल डिवाइस, या इस तरह का पहले आता था। तो उसको आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे इन करना है, फिर उसको प्रोसेस करना है। तो उनके बीच में उस इंस्ट्रक्शंस को रीड करने के लिए सीपीयू को एक और जो है प्राइमरी मेमोरी की जरूरत होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कौन कौन सी होती हैं सेकेंडरी मेमोरीज? हार्ड डिस्क ड्राइव्स हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। हार्ड डिस्क ड्राइव को कहते हैं एचडीडी, कैपिटल में एचडीडी, और कैपिटल एस एस डी होता है सॉलिड स्टेट डिवाइस। ऑप्टिकल डिस्क होती हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क होती हैं, सीडीज होती हैं, एसडी कार्ड्स होते हैं, मेमोरी कार्ड्स होते हैं, फ्लॉपी डिस्क भी होती है, क्योंकि ये भी वन ऑफ द सेकेंडरी डिवाइस है जिसको कि आप अपने पास रख सकते हो, और जब आपको उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की या उस डॉक्यूमेंट की, उस फाइल की ज़रूरत है, तो आप उसको सिस्टम में डाल के और देख सकते हो। लेकिन आजकल ये स्लॉट अवेलेबल नहीं होते हैं, क्योंकि ये डिस्क जो है अब ऑब्सोलेट हो चुकी हैं। पहले यूज़ होती थी, इवन सीडीज भी अब नहीं यूज़ होती हैं आजकल। पहले लैपटॉप में भी एक सीडी के लिए एक सॉकेट आता था, अब नहीं आता है। तो ये जो है कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। और सेकेंडरी मेमोरीज के दूसरे जो नेम हैं वो हैं एक्सटर्नल मेमोरी, बैकअप स्टोरेज और मास स्टोरेज मीडिया। क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप का जो सीडी है या पेन ड्राइव है या जो डिस्क है, एचडीडी है या एसएसडी है, उसका स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है। वो डिपेंड करता है कॉस्ट के हिसाब से, आपके नीड के हिसाब से आप कितने भी MB/GB का खरीद सकते हो मार्केट में। So the examples of secondary memories are hard disk drive, solid state drives. Short forms are HDD, SDD. OD is optical disk. Then SD cards जो सब आपके मोबाइल के लिए भी अवेलेबल हैं, कैमरास डिजिटल कैमरा के लिए भी अवेलेबल हैं, आपके लैपटॉप के लिए भी अवेलेबल हैं, या डेस्कटॉप जो भी आप यूज़ करते हैं। मेमोरी कार्ड्स भी अलग अलग कैपेसिटी के आते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी के। कॉम्पैक्ट डिस्क भी आती हैं, और फ्लॉपी डिस्क भी अब यूज़ नहीं होती हैं, लेकिन दे आर कंसिडर्ड एज सेकेंड मेमोरी। ऑलराइट, other names are external memories because they can be a separate entity as compared to your computer system. And backup storage or mass storage media, you can say that. Now here there are some details of each type of secondary memory, so we will not go into much detail, but yes, you should know what is hard disk, or what is solid state devices, or what are the compact disks and all. So hard disk drive is a hard drive. It is a fixed storage device which is commonly found inside the computers, laptop or servers or any other computing devices. It is electromechanical in nature because there is a arm there is a disk which is having some magnetic material coating, and this all the information is encoded on this magnetic material on the surface of the disk, and to read it there is a pointer. So the movement of pointer will be the means of to access that information.
So that means there is a mechanical movement, mechanical devices which you can see. So that's why it is an electromechanical data storage device, and it contains, the rotating platter, which is placed one after the other and covered with a magnetic material, and then it reads and also it writes the data to the platter surface. A fixed and a hard disk is placed into the drive unit, and one hard disk is there in your computer system or desktop system. But if you want to replace it, you can replace it. You can put some, if it is full, its capacity is fully utilized, you can take out the hard disk and you can place the new hard disk, or you can increase the storage capacity as per your need. So it is available in different storage capacities depending upon your requirement, 250 GB to 1 terabytes or 2 terabytes. Now floppy disk look like this, as is you have the picture is shown, and it is again a storage device, and it is having a thin and a flexible magnetic. It is also a magnetic storage device, and it is storing data and transferring it between the different devices. You can commonly, earlier it was very much in use. So, but their capacity is very, very less. It is just 1.4 to 5 MB. That's it. But they are obsolete and they are replaced by optical discs. इसको हिंदी में भी मैं बता देती हूँ आपको कि हार्ड डिस्क जो है वो एक मैग्नेटिक मटेरियल का डिस्क होता है, मेटल का, उसके मैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग होती है उसके ऊपर, और ये जो डिस्क है ये एक उस स्पिंडल के चारों तरफ ऐसे घूमती है, जैसे आपने रिकॉर्ड प्लेयर देखा होगा, यदि पहले के समय में ग्रामोफोन या रिकॉर्ड प्लेयर होते थे, बड़े बड़े एलपीज होते थे, और उसको एक जो सिस्टम होता था रिकॉर्ड प्लेयर, उसके ऊपर रखते थे और एक पॉइंटर उसके ऊपर लगाते थे, तो वो पॉइंटर जहाँ जहाँ मूव करता था वहाँ वहाँ का जो है गाना या जनरली म्यूजिक के लिए ही यूज होता था, तो वो म्यूजिक जो है आप सुन सकते थे। 2 और 3 और 4 इस तरह से गाने एक डिस्क के ऊपर होते थे और ये दोनों तरफ भी रिकॉर्ड हो सकते थे। तो इस तरह से वैसा ही जो है ये डिवाइस होता है हार्ड डिस्क, और इसमें मैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग होती है, उससे वो बहुत बड़ा होता था, ये थोड़ा छोटा होता है। पहले तो और बड़ा आता था हार्ड डिस्क, अभी काफी छोटा सा होता है, एकदम कॉम्पैक्ट सा, आपके पाम के बराबर, और उससे भी छोटे आते होंगे शायद अभी। तो इनकी जो कैपेसिटी है ये बहुत ज्यादा होती है, और इस तरह का जो एक पॉइंटर जो है ये एक्सिस पे है, तो ये इस तरह से मूव करेगा और ये पॉइंटर से जो है इंफॉर्मेशन जो है वो रीड कर सकते हैं। इसमें रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो, क्योंकि आपको यदि कोई चीज़ नहीं चाहिए तो आप उसको डिलीट करके दूसरा प्रोग्राम भी उसमें आप स्टोर कर सकते हो। ये आपके ऊपर है, आपके यूज़ के लिए है। और इसकी जो कैपेसिटी है वो 256 GB से लेके 1, 2, 3 और अब और ज़्यादा आने लगे होंगे, टेराबाइट्स तक हैं। ये बाइट्स के बारे में अभी हम पढ़ लेंगे कि टेराबाइट्स क्या, मेगाबाइट्स क्या, और इस तरह से अभी हम देख लेंगे उसको, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। फ्लॉपी डिस्क जो है वो इस तरह से ही होती है, ये भी एक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है, और इसमें भी जो है कंप्यूटर से आप डेटा ले भी सकते हो, और रन करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके आप उसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन अब ये यूज़ नहीं होता है। लेकिन इसकी कैपेसिटी जो है वो पहले के हिसाब से ठीक थी, क्योंकि पहले इतनी जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर नहीं करनी पड़ती थी। आजकल आप यदि ऑडियो वीडियो यदि कोई मूवी यदि आप डाउनलोड करके किसी स्टोरेज डिवाइस में रखना चाहो या पिक्चर्स को रखना चाहो, तो वो हाई डेफिनेशन वाली होती हैं, उसमें माइन्यूट से माइन्यूट इंफॉर्मेशन भी जो है वो आप स्टोर करते हो, इसलिए स्टोरेज कैपेसिटी जो है बढ़ गई। आप एक ही उसमें 2-3 डिपेंडिंग अपॉन की कितनी कैपेसिटी है, एक साथ डाउनलोड करके बहुत सारे पिक्चर्स को डाउनलोड करके आप रख सकते हो, फोटोग्राफ्स है या
आपके काम का कोई ग्राफिक है या कहना चाहिए डिज़ाइन पार्ट है, तो वो सारी चीज़ें जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मांगती हैं, बहुत सारा डेटा मांगती हैं, वो आप स्टोर कर सकते हो। पर इनकी कैपेसिटी जो थी वो उस समय के हिसाब से ठीक थी, अभी के हिसाब से ये ऑब्सोलेट हो गई हैं। 1.5 MB तक इनकी स्टोरेज कैपेसिटी होती थी। नाउ सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, ये अभी currently they are very much in use and they are costly also, SSD devices, because they are based on very their capacity is very very large, and they use very cheap semiconductor based devices. So chip is having billions of transistors into the single chip. So and they do not have any mechanical part or moving part. It is a flash type memory, where various gates and all the circuitry involving the transistors, NAND gate and NOR gate and all that, those you don't have to understand. It's not necessary here. So two primary components contribute to the high read and write performance delivery, because they are fast as compared to the other secondary storage. Their capacity is also very very large, and they are costly also. An optical disc, that are the CDs, where the information is written using the laser beam, using the light. That's why they are optical discs. And you can write and you can read data from those discs. There are CDs, DVDs, or Blu-ray discs. There are mainly three types. A simple CDs, compact discs, and then DVDs, that is digital visual display units or discs, and then Blu-ray disc, where the blue laser is used. That's why it is called Blu-ray discs. So commonly there are three types of disc. Here they are shown on the picture. So all three are optical devices, optical storage devices, and their CD has storage capacity around few hundreds, like 700 to 800 of MBs, and they are of two types: CD-R, CD-RW means you can read only, and then some CDs you can read and write. You can store your data, you can erase your previous data and rewrite it. So that those CDs are also not in a current not in a use currently. And DVDs are digital versatile discs, or you can say digital video discs, and they are similar to CD, but their capacity storage capacity is very very large, because here you can store the visuals or the videos, all right, movies or any video recording or any multimedia files of large sizes you can store here. And they are also of two types: read or read and write. You can only a fixed DVD where you can read or you can see the information which are already stored, and there are some DVDs where you can delete the information and write the new information on it. Then Blu-ray disc, it is also again optical storage medium, and the capacity is larger, up to 25 GB data you can store. You can use for recording or rewriting or playing back whatever the HD videos. So blue violet laser is used here to store the more information into it. And then memory cards, here it is shown, they are also semiconductor devices, and they are used in various cameras, smartphones, or game consoles and all. And they are also, you can store video, audio, any file or PDFs of large capacity, and available in different storage capacities from 8 GB to 128 GB. So the capacity is very, very large. Magnetic tapes are also not in a use. They are also a type of storage devices. Then the third one is cache memory. Till now, we have studied primary memories, secondary memories, then cache memory. Cache memory is
Sometimes it is considered a second, means third type of memory. Otherwise, it is a part of, you can say, CPU. All right, is a small size chip, which is, memory in a computer, which lies between main memory and CPU. Main memory means RAM, and CPU, because RAM is also be placed near to CPU, because this is the only memory through which the CPU gets the command, what to operate, how to process. All right. So it is very close to chip of CPU on the motherboard. So the aim of this memory is just to enhance the performance of CPU by speeding up the processing. So how you speed it up? As soon as fast as the CPU gets the command or instructions, how to process, what to process, and then the system automatically gets faster. So for that, this spatial memory is placed between the CPU and the main memory to enhance the performance. And a different chip, somewhat costly, but yes, if you want to enhance the functioning of a system, so you must need it. So this is a high performance and temporary type of memory. It is same like RAM, and that reduces the access time of data from main memory. So each instruction or data that is often used by CPU is stored within the cache memory. And this is again of three types: L1, L2, and L3. So the fastest is near to CPU, which is the level 1, and then level 2, and then level 3, which is near to the main memory, just to enhance the performance or speed up the processing. So this is the memory hierarchy here. इसको मैं हिंदी में भी बताती हूँ आपको. ब्लू रे डिस्क और ये जो कॉम्पैक्ट डिस्क है, ये भी जैसे राउंड साइज आपने सबने देखा होगा, आपने यूज भी किया होगा. अभी जो कंप्यूटर सिस्टम्स या जो भी हम लैपटॉप्स या डेस्कटॉप लेते हैं, उसमें ये फीचर नहीं है आता एक सीडी को इंसर्ट करने के लिए. पहले एक स्लॉट आता था. तो ये 3 टाइप के हैं बेसिकली. कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसमें कि आप जो है इसकी जो कैपेसिटी वाइज और थोड़ी सी इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है, उसमें डिफरेंस है. तो सीडी की ये सबसे पहले आया, तो इसकी कैपेसिटी जो है वो कम थी. इसमें आप लिख भी सकते हो, और मतलब कि कुछ स्टोर भी कर सकते हो, और कुछ सीडीज ऐसी होती हैं जिसमें कि जो भी प्रोग्राम्स हैं जो भी फाइल्स हैं, उसको आप सिर्फ देख सकते हो, पढ़ सकते हो. बाकी आप उसमें उसको हटा के दूसरा नहीं स्टोर कर सकते. लेकिन एक CDRW आती है जिसमें रीड एंड राइट, मतलब कि आप देख भी सकते हो, उसको हटा के दूसरा आप अपने हिसाब से उसमें दोबारा स्टोर करके रख भी सकते हो. डीवीडी में जो है उसकी कैपेसिटी, इसकी जो कैपेसिटी है वो 700-800 MB तक की थी. लेकिन फिर डीवीडी आया. डीवीडी में डिजिटल वर्सेटाइल, इसका जो फुल फॉर्म है वो भी आप याद रखना, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क इसको कहते हैं. इसमें जो है इंफॉर्मेशन ज़्यादा आप स्टोर कर सकते हो. इसमें जो आपने मूवी यदि डाउनलोड करके रखी है या ऑडियो रखा है, उसकी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी होगी एज कम्पेयर टू सीडी, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो इसको स्टोर करके रख सकता है. इसकी कैपेसिटी कितनी होती है? इसकी कैपेसिटी जो है वो 5 GB के करीब आती थी. उसके बाद में ब्लू रे डिस्क है. ये भी एक तरह से सीडी ही है, कॉम्पैक्ट डिस्क ही है, ऑप्टिकल स्टोरेज यूनिट ही है, लेकिन इसकी कैपेसिटी जो है वो उससे भी ज़्यादा है. अप टू 25 GB तक आप डेटा स्टोर कर सकते हो, जो हाई डेफिनेशन वीडियोज़ हैं या आपके कुछ और रिकॉर्डिंग्स हैं. कुछ रिकॉर्डिंग्स आप देखो, चाहे वो सिंपल एक गाना ही हो, कुछ सिस्टम में या आप यदि स्पीकर्स यूज़ करते हो या ईयरफोन यूज़ करते हो, कुछ में आप नोटिस करिए कि बहुत ही रॉ सुनाई देता है, और उसमें कुछ जो कंपनीज के हेडफोन्स आते हैं या ईयरफोन्स आते हैं, उसमें आपको जो म्यूज़िक है वो बहुत अच्छे से सुनाई देता है. ईच इंस्ट्रूमेंट का वॉइस, ईच इंस्ट्रूमेंट को आप मेक आउट कर सकते हो कि हाँ ये बज रहा है, सारंगी बज रहा है, संतूर बज रहा है, ये जो आपका सितार है वो बज रहा है.
या फिर ड्रम बज रहा है या फिर ढोलक बज रहा है, वो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आता है, आप उसको एंजॉय अच्छी तरह से कर सकते हो। उसी तरह से वीडियो की क्वालिटी भी डिफर करती है, तो जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उसको स्टोर करने के लिए जो कैपेसिटी है डिवाइस की वो उतनी ही ज्यादा होनी चाहिए। तो इसीलिए ब्लू रे डिस्क जो है एज कम्पेयर टू CD एंड DVDs इट इज हैविंग लार्ज स्टोरेज डेटा। सो हाई डेफिनेशन जो चीजें हैं, वीडियोस है, ऑडियोज है, वो आप स्टोर में कर सकते हो। इसमें ब्लू वॉयलेट लेजर का यूज होता है, इसलिए इसको ब्लू रे डिस्क कहते हैं। मेमोरी कार्ड्स जो हैं वो सॉलिड स्टेट कार्ड जो हमने भी बताए वो होते हैं, और ये कैमरा में भी यूज करते हैं, लैपटॉप में भी यूज करते हैं, आपके मोबाइल में भी आते होंगे छोटे, या फिर गेम कंसोल्स जो होते हैं उसके लिए यूज करते हैं। इसकी जो कैपेसिटी है ये ब्लू रे डिस्क से भी बहुत बहुत ज्यादा होती है, अप टू फ्यू हंड्रेड्स ऑफ GB डेटा आप इसमें स्टोर करके रख सकते हो। अब ये हायरार्की है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि किस तरह से जो है कॉस्ट और स्पीड जो है डिफरेंट मेमोरीज का जाता है, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि किसकी कितनी मेमोरी है, या फिर किस तरह से वो एक सीक्वेंस दे देते हैं, सारी मेमोरीज के नाम दे देते हैं, और फिर क्वेश्चन आता है कि इन असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर टू द स्पीड और कॉस्ट यू हैव टू अरेंज देम। और उसमें भी जो है वो थोड़ा सा इस तरह का होता है कि कंफ्यूज हो जाए आदमी, तो इसलिए ये जो चीज है ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो सबसे कम स्पीड जो होती है वो किसकी होती है, आपके जो कंप्यूटर में जो है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफलाइन स्टोरेज, टेप ड्राइव्स और वो होते हैं, वो बहुत स्लो होते हैं। उसके बाद में आता है हार्ड डिस्क, तो हार्ड डिस्क की फ्यू मिली सेकेंड स्पीड होती है। फिर आता है रैम, रैम जो है वो फास्टर है, मतलब 100 नैनो सेकेंड्स। नैनो का क्या मतलब होता है, 10⁻⁹ इतना, मतलब इतना सेकेंड्स का इतना कम उसमें ये फंक्शनिंग करता है। और उससे भी फास्ट होती है कैश मेमोरी, कैश मेमोरी का है 10 नैनो सेकेंड्स, ठीक है। और उससे भी फास्ट होता है आपका CPU रजिस्टर। CPU में भी बहुत सारे रजिस्टर्स, एक रजिस्टर्स एक सिंगल एंटिटी होते हैं, छोटे छोटे सर्किट्स होते हैं जो कि एक एक यूनिट का इंफॉर्मेशन जो है स्टोर करते हैं, फ्लिप फ्लॉप टाइप जिसे बोलते हैं ना, ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ, मतलब वो इतना फास्ट होता है कि आप उसको मेक आउट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो फास्टेस्ट जो मेमोरी है वो है रजिस्टर्स, उसके बाद कैश, फिर रैम, फिर हार्ड डिस्क, और फिर आपका जो ऑफलाइन स्टोरेज है, जो टेप ड्राइव्स है, जो सेकेंडरी आपकी जो मेमोरीज हैं, जो सेकेंडरी मेमोरीज में आपका एक्सक्लूडिंग हार्ड डिस्क जो भी सारे हैं वो आ जाएंगे, क्योंकि हार्ड डिस्क भी एक सिस्टम का एक पार्ट है, लेकिन वो अलग से है, वो आप उसको डिटैच करके उस बड़ा साइज का भी रख सकते हो, आपके प्रोग्राम्स को, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करता है, इसलिए वो सेकेंडरी डिवाइस है। अब उसके बाद में जो है कॉस्ट वाइज इफ यू सी, सो कॉस्ट इफेक्टिवली आप यदि देखें तो अपोजिट है ये। साइज भी आप देखो कि जो सेकेंडरी डिवाइसेस हैं दे आर हैविंग पोटेंशियली they are large in size, and when you go towards register they are very very small, very very small, and cost जितना small होगा डिवाइस उतना ही वो expensive होगा। ये थोड़ा सा ऐसे ही रफ आइडिया है उसको याद करने का। तो the first, your secondary memories they are least expensive, and size wise they are large, and as you go above in the hierarchy, this hard disk they are expensive, then RAM it is more expensive, cache it is very expensive, and CPU it is again very expensive. So likewise, and the size is going down, means size is smaller smaller smaller, means potentially huge size is of secondary memories. Then if you go from hard disk, RAM, cache, they are comparatively smaller.
One more thing I want to cover. Just a moment. Okay. Do you have any other class after that? No, no, Okay. we don't have any. Okay. That's actually, ma'am, English people don't have class. I don't know about Hindi. Okay. हिंदी में कोई क्लास है आपकी? शाम में है मैम, अभी नहीं है। अभी नहीं है, ठीक है। ये और एक चीज हम देख लेते हैं और उसके बाद में फिर हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो है वो कल कर लेंगे। नो नो टुमारो इज नॉट टुमारो, on Monday. All right. Now this is again a important you can say a thing which is the unit of computer memory measurements. So as you all know, computer works on digits. Digits be which we call bits. Bits means 2 bits, 2 numbers by. All right, 2 numbers, 0 and 1. So this is the basic unit of information, that is bit. But bit is, just only 2 digits, 0 and 1. So this is a very small unit. But the information which we talk about, it is number of bits. So we just have, some formation of bits, which we call like 4 bits. If it is a combination of 4 bits, then we call it nibble. And if it is a combination of 8 bits, then it is called 1 byte. So bits is always written in small b and byte is written in capital B. That is the difference. All right, 8 bits counts 1 byte. Just to make this, the combination of bits into, just to compress the information in, it's very difficult to write a number of bits because large number of information is there. So we just compress it and we call 8 bits as 1 byte. So we generally talk about you can say the unit of information or storage unit or any unit in bytes generally. So 10 raised to 3, that means 1 kilobyte. 1 kilobyte is, here it is written, 1 kilo means 3 zeros, all right? But if you say 1 kilobyte, then it is not 1,000 bytes. It is 1024 bytes because this is in decimal numbers. This is decimal numbers, which we generally use. Decimal numbers means 0 to 9. That we call decimal numbers. But here we use binary bits. So base is 2. So 2 raised to 10 is equal to 1024. That's why it is always, it is not never 1000 is 1k bits. It is 1024 bytes in 1k byte. So remember this. All right.
Then 1 MB, M means mega. Mega means 10 raised to 6 in decimal. So if you raise the power by 6, you have to raise the power here by 10. All right. So in the multiples of 3, this increases the power in decimal numbers. And if you increase by 3 here, you have to increase by 10. So if it is 10 raised to 3, here it is 2 raised to 10. Here, if you increase it by 3, you have to increase here in bytes by 10. So like that, it is 2 raised to 10, 20, 30, 40, 50, 60, and so on. Now, 1K means 3. All right, here it is 3. 1 mega means, again, you have to add 3 zeros. First, we see the decimal counts. All right, then you go here. Yeah. Now, if you are getting somewhat confused, you remember this thing. It is base of 10 decimal numbers. It is base of 2. That is binary counts. This is what we call, a digital representation or a binary representation, you can say more correctly. So in K, it's 3 zeros. In mega, it's 6 zeros. In giga, it's 9 zeros, means it's a multiple of 3 and nothing else. But you should remember these terms. All these are the Greek, you can say, interpretation, or in a Greek language, this is the, terminology. Kilo, mega, giga, tera, peta, hexa, zeta, and iota, and all that. So this is the representation, but sometimes they ask a question on it, all right, in mega, giga, tera, peta. So you just have to remember these terms, you can say the powers of 10, and then these terms: kilo, mega, giga, tera, peta, hexa, zeta, and iota. Iota is the largest one, all right. So here in terabyte, it is 10 raised to 12 bytes, or you can say 2 raised to 40 bytes. So I think, is it clear to you, all of you? Any confusion? Anybody? We have to remember this. Yes, you have to remember. sequence. Yeah. Yeah, this is the only way. This is easier. The power 3, multiple of 3, 6, 9, 12, and all that. But what to call it? These are the terms. These are Greek terms. They're not generally we use in our daily basis, on daily basis. So you have to remember it. These are the common terms: kilo, mega, giga, because we talk about some memory device or storage device, or your pixel size, or your computer, or your mobile phone. So up to giga, it's fine. But above that, that is tera, peta, hexa, zeta, and iota. It's not much difficult to remember. If you go through one or twice, you will be familiar with it. Okay. So any doubt or anything?